We, on the behalf of Elevate Educational Trust, paid a visit to a school run by Samaj Kalyan Kendra for hearing handicapped children. It was a conscience touching experience. The warmth of the students and the dedication of the teachers reminded us the power of inclusivity. Their struggles acted as an eye opener. Witnessing their determination, willpower, and indefatigable efforts ignited our spirits. The teachers and the staff displayed remarkable patience, creating nurturing environment for every child. Let's witness the stories that drove us. Meeting all the architects of the future instilled a light of gratitude within us. Children with diverse backgrounds, ages, studied like a family. Hence, we walked on the path of philanthropy and decided to earmark timely funds for fostering these young minds. This organization, J&K Samaj Kalyan Kendra, is a voluntary social and charitable organization. It was founded by one philanthropist, Dr. R.R. Khujuria. He was a veterinarian, he was MBSc veterinarian, and then he had done PhD in dairying. And he retired as managing director animal husbandry. He got an idea that we have an institution run by government for visually handicapped. Then another institution run by Red Cross for physically handicapped. But there is a gap where nobody is working for hearing, speech and language disabled children. Right. So he got an idea. He started an organization himself individually, J&K Samaj Kalyan Kendra, and called his brothers, his friends, etc., and formed an association of persons. And he met this divisional commissioner. Then she was Secretary Social Welfare, Madam Sushma Chaudhary, and conveyed his idea to her. She said, yes, we have one person trained in this field. He is in Srinagar. I know him. If you want to start, he is the man who will get it started. Right. So she approached me. I went to Secretariat. I met her and she said, we want to open an institution for these children at Jammu. I said, okay, I'll do it. So I came to Jammu. We started this institution on 31st March 1981. In a single rented room at Saraja Daki Lakshmi Narayan Temple. We got the room on 50 rupees rent, and we gave a start to this institution and got it inaugurated by Begum Abdullah. Right. She was the leading lady, first lady of this Sheikh Saab ki missus. So, and from there we started, children began to come, and then we had to shift to 4-room rented accommodation at Parade Gita Bhavan, and from there we approached the government, Jagmohan Saab, the governor. He approached Chief Minister, and we got this vacuum property building for this institution in 1986. The sole motto behind this institution is to rehabilitate hearing, speech and language children educationally, socially and economically, so that they may not become burden on their parents, on the society, state or the country. They should live independently like normal people, a king size life. This is the motto behind this organization, and we are
working hard, and we have managed to settle some of the children, and we are doing it. We are providing them education. This education is totally free of charge. We are not charging anything, but we are providing books of not always, but oftentimes we are providing books and stationery almost throughout the year. Right. Everything pertaining to the education, and whatever institution has to spend on them spends on its own and not from the children, nothing. We have got this fee extra exempted from Board of School Education, so they have nothing to pay there also. Right. As for education, see, education is rather tough because analytic method we start in normal school. We start with analytic method A, B, C, D, F, G, H, E, L, B, P. But in these cases, we doesn't stop with alphabetically. We start acoustic education. Say, Papa. This we start. Papa is the first word we give the child. As for education, what we do, we have got 1272 words, a syllabus for 4 years, but I have converted it into a syllabus of 3 years. These 1272 words are the words which a normal child at the time of joining an educational institution as a nursery student has already in his vocabulary. Oh. We build this vocabulary among these children in first 3 years, that is pre-primary 1, pre-primary 2 and pre-primary 3. And after completing pre-primary, we go to board syllabus, first primary, second primary, same syllabus, same books, same pattern of education. They appear in the board examination with normal children. Same pattern, there is no difference. In fact, we can also provide them scholarship agar suppose in the state services में कोई we will talk on the show. We'll sit some MOU कि अगर आपके यहाँ से कोई भी इस तरह की चीज करता है, संस्था है हमारे यहाँ, मैं जंडियाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको मीटिंग में बुलाएं, वहाँ पर बैठकर हम प्रॉपर एक MOU में लिख के दे दूंगा कि बहुत अच्छा, बहुत तो होगा ही होगा कि अगर कोई परस्यू करना चाहता है, he has not to pay any money there, और उसको मैं जो है प्रॉपर तैयारी कराऊंगा. ठीक है, बहुत अच्छा है, इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा. हमारे बच्चों ने ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 5 बच्चे गए थे, 3 ने BSc कर दिया उसमें, और 2 बच्चे हायर PG के लिए वहाँ कर रहे हैं, MCA कर रहे हैं. 2-3 ने BCA किया, उसमें से 2 बच्चे गवर्नमेंट में एब्जॉर्ब भी हो गए, बाकियों के लिए भी ट्राई चल रही है. बट दिस इज मेकिंग ए ह्यूज डिफरेंस जो आप लोग कर रहे हैं. एक तो वन दैट इट इज़ नॉट वेरी इजी टू डू. ये इसके लिए सबसे ज़्यादा जो चीज़ चाहिए होगी वो होगी पेशेंस. मतलब आपको पेशेंटली इन बच्चों को हेल्प करते रहना होगा. एट टाइम्स हमारी कैपेसिटी में उससे नीचे जाना, जो हमारी कैपेसिटी सुनने की है, समझने की है, उससे नीचे जाना बिकम्स वेरी दिस थिंग कि वो मैनेज नहीं हो पाता हमसे. और फिर देन आप इसको 81 ऑनवर्ड्स अभी तक इसको रन इस तरह कर रहे हो ब्यूटीफुली, इतने सारे बच्चों को. और मैं आपको बताऊं कि आई हैव वर्कड इन सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड आई प्रेजेंटली आल्सो, लेकिन ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमारी राइट फ्रॉम 81 जितनी मैनेजमेंट्स आए यहाँ पर, किसी ने ये नहीं देखा कि आप ऐसा है क्या है का नहीं, खर्चा करना है बस, ठीक है यार, किसी ने निकाला 500 रुपये, किसी ने कुछ तो ऐसी. मगर अगर आप लोग इतना बड़ा काम और बढ़िया काम जो ऑन ग्राउंड, एक्चुअली लोग क्या करते हैं, कोई पैसों के लिए NGO खोलते हैं और काम कुछ होता नहीं है, फालतू के पैसों के लिए करते हैं. हाँ, देखा हमने. आप लोग का 81 से संस्था है और उन बच्चों के लिए जिनको एक्चुअली इस समाज में जरूरत है. गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं हमारे बच्चे, दे आर वर्किंग इन द गवर्नमेंट, एंड गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड विद देयर वर्क. क्यों? क्योंकि ये जो बच्चा है ही इज वेरी मच कंसंट्रेटेड. पीछे बम फटे, तूफान आए, गोले चले,
ये He they are doesn't hear. concentrated. वो अपने जिस काम में लगा है उस काम में लगा है। भाई ये स्कूल अगर देखा जाए आपसे ज्यादा जरूरत ही स्टेट को थी, मतलब आप बिल्कुल आपका चाहत बिल्कुल की वजह से आप कर रहे हो। इन बच्चों But- का भी हक है कि एजुकेशनली साउंड हो जाए। आप अपनी चाहत की वजह से कर रहे हैं, बट स्टेट की जिम्मेदारी है। शौकिया तो आप शौकिया तौर कर रहे हैं, स्टेट की जिम्मेदारी है। बट अगर सपोज आप उमर अब्दुल्ला साहब, एलजी साहब या किसी भी इंसान के पास गए हो और उन्होंने इस संस्था की उस तरीके से मदद नहीं की जिस तरह से करना चाहिए। ऑफ कोर्स एलजी साहब ने अगर किसी के थ्रू करवाया, श्राइन बोर्ड से करवाया, कुछ भी हो, उनके पास बड़ा डिसीजन लेने की क्षमता है। बिल्कुल दुनिया भर की लैंड है, क्या है 7 कनाल 8 कनाल लैंड में है, वो क्या नहीं बना सकते। आजकल कमर्शियल इतने बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस और बाकी सारी चीज़ें बन रही है, अगर हम देखें तो जिनको जेन्युइनली हेल्प होनी चाहिए उनकी नहीं हो रही। मैंने वही कहा उसको, मैं कहा मदर टेरेसा के लिए आपको लैंड है, इंटरनेशनल एसओएस के लिए लैंड है, लेकिन अपने इन बच्चों के लिए नहीं है। ये हाल है, क्या करें आप। ये था कि अगर बिल्डिंग अपनी होती तो मैंने आईटीआई भी स्टार्ट करना था, पॉलिटेक्निक भी स्टार्ट करना था, क्योंकि ओवर एज जो हैं, जो एजुकेशन लेवल से निकल चुके हैं, 15-16 साल की एज के बच्चे को क्या पहले में बैठाएंगे, तो उनके लिए हम वो आईटीआई कुछ ऐसा किया जा सकता। अच्छा, जो यहाँ से हमारा ये हायर सेकेंडरी निकल कर उनको पॉलिटेक्निक ट्रेनिंग सिखाते हैं। अर्निंग है, हमारा मकसद है इज्जत से ये अपनी रोटी कमा सके, ये हमारा मकसद, इज्जत से, चोरी चकारी ये वगैरह ये चीज़ें ना हो। आइए मैं आपको क्लास सुनाऊंगा। As Plato once remarked, true knowledge is imparted by the teacher who helps us realize that the real source of light is the sun, not just the fire flickering before us. In the same way, the teachers at this school for the hearing impaired were not just instructors. They were beacons of love, patience, and quiet strength, illuminating paths with their hearts more than their voices. Though the sun blazed above, it were their smiles that lit up the day as we, headed by the president of Elevate Educational Trust, Mr. Owais Ali Bhatt, handed out eatables and notebooks to every child. The air was filled with laughter and ecstasy. You can be a helping hand too and light up their years ahead by donating to Elevate Educational Trust or directly to the Samaj Kalyan Kendra Trust. शिक्षा और ज्ञान ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिनका उपयोग करके आप इस संसार को बदल सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम उवैस अली भट्ट है। मैं प्रेसिडेंट एलिवेट एजुकेशनल ट्रस्ट हूँ
मैं बेसिकली पिछले 15 साल से एजुकेशन सेक्टर में हूँ। एजुकेशन में हूँ इन द सेंस कि मैं बच्चों को यूपीएससी, स्टेट सर्विसेज एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कराता हूँ, उनको कोच करता आया हूँ। और ये काम करते साथ मुझे ये भी एहसास हुआ कि मुझे एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप करना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में एक तरफ तो मैं एजुकेशन दे रहा हूँ जहाँ बच्चा पैसा दे सकता है, जहाँ बच्चा अफोर्ड कर सकता है, दूसरे साइड से कुछ ऐसे भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनका मन तो होता है लाइफ में कुछ करने का, बट वो सिर्फ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो ये दिमाग में रखते हुए मैंने अपना एक एनजीओ, एक सोसाइटी ट्रस्ट जो मैंने बनाया, उस जो एलिवेट एजुकेशनल ट्रस्ट है, 3 साल पहले मैंने बनाया। काफ़ी सारा हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है गरीब बच्चों के लिए, वो चाहे स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए। शुरुआत हमने जम्मू से की थी, धीरे धीरे हम पुलवामा में हमने एक ऑफिस बनाया रिसेंटली। उससे पहले हम श्रीनगर में हमने कुछ काम किया था। तो रेगुलरली हम उसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, रेगुलरली हम उन सारे बच्चों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिसको एक्चुअली फाइनेंशियल नीड है, जिसको एक्चुअली एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है। तो ये मेरा एक छोटा सा मेरे साइड से कंट्रीब्यूशन है जो मैं सोसाइटी को एक तरीके से गिव बैक वाला जो कंट्रीब्यूशन है जो मेरा सोसाइटी की तरफ वो मैं करना चाहता हूँ इस एलिवेट एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ। मैं मेरी पूरी टीम की तरफ से पूरा एफर्ट रहेगा कि हम हर वो इंसान जो जिसको हेल्प की ज़रूरत है अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे पुलवामा में हमारा ऑलरेडी ऑफिस है, श्रीनगर परेपुरा में हमारा ऑफिस है, जम्मू में हमारा गांधीनगर में ऑफिस है। तो जो लोग वॉलंटरली हमसे जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ भी सकते हैं। लोगों की खिदमत, लोगों के मदद करने के लिए जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। और हमें बहुत खुशी होगी अगर हमारे साथ जुड़ेंगे। प्लस आने वाले कुछ टाइम में हम कुछ और इवेंट्स करेंगे, कुछ और प्रोग्राम करेंगे जो हम सोशल मीडिया के थ्रू एलिवेट एजुकेशनल ट्रस्ट का एक इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब चैनल है हमारा, फेसबुक है, अपना वेबसाइट है, जिसको विज़िट करना होगा इन सारे चैनल्स पे, सोशल मीडिया पे कर सकते हैं। प्लस हम नीचे एक नंबर भी देंगे कि अगर कोई किसी सूरत में किसी को मदद पहुंचाना चाहता हो, हमारे थ्रू पहुंचाना चाहते हो, वी आर रेडी टू डू दैट। हालांकि हमने अभी किसी सूरत में कोई चैरिटी या इस तरह की कोई चीज़ लेनी शुरू नहीं किया लोगों के लिए, बट इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़ेगी वो भी हम करेंगे। फ़िलहाल हम अपने जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन है वो प्योरली हमारा अपना है, हमारी अर्निंग से निकलता है, मेरी अर्निंग से होता है। और मकसद सिर्फ है, विज़न ये है कि हम उन सारे लोगों तक पहुँचे जिनको मदद की ज़रूरत है, और हम हमेशा पहुँचते रहेंगे। थैंक यू सो मच।